इस वीडियो के मकासद वालिदैन की रहनुमाई के लिए ये जानना कि मोंटेसरी तरीके तालीम में हम स्मॉल लेटर्स के नाम नहीं बल्कि उनकी आवाज़ें निकालते हैं। अल्फ़ाबेट अ की आवाज़ और उसके ज़ख़ीरे अल्फाज से मुतारफ़ करवाना, ज़ख़ीरे अल्फाज की शुरू की आवाज़ों पर गौर करना ताकि उनको पहचाना जा सके। अल्फ़ाबेट अ की लिखाई 4 सतरों पर दुरुस्त तरीके और बनावट से लिखना सीखना। Children, let's listen to this new sound. A, 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 a. A is for umbrella, 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 umbrella. A is for umbrella. A is for unhappy, 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 unhappy. A is for unhappy. A is for under, 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 under. A is for under. Children, can you tell me, is this a umbrella? Is this an umbrella? Is this a umbrella? This is an umbrella. Umbrella. Is this happy? Is this happy? Is this happy? This is unhappy. Unhappy. Is this under? Is this under? Is this under? This is under. Under. Children, now let's see how we write a sound. A. 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 A has one starting point. We don't pick up our pencil when we write A. Children, can you tell me, is a sky letter, a grass letter, or a rude letter?
A is a grass letter because we write it in the grass lines. Children, let's see how we take out this sound that we have learned today. A